Assalamualaikum and welcome back to my channel ACC501 midterm short notes कर रहे थे हम लेक्चर 1 to 19 में। तो हम पहले 5 चैप्टर कर चुके हैं, तो आज की इस वीडियो में करेंगे हम चैप्टर 6 से। डिप्रिसिएशन, चैप्टर 6 डिप्रिसिएशन mean gradually spreading the cost of something valuable like a machine or vehicle over the year it is used। इसमें कुछ ये है जी, कुछ शॉर्ट फॉर्म है हमारी। EBIT क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। EBT अर्निंग बिफोर टैक्स होते हैं हमारे। डिप्रिसिएशन अच्छी फाइनेंशियल कैश फ्लो। In finance, the most important item that can be extended from the financial statement is that actual cash flow of the firm. Cash flow from asset is equal to cash flow to creditor plus cash flow to stockholder. Cash flow statement. Cash flow statement is the third important financial statement. It tells us that the cash inflow and cash outflow of the companies during the financial year, normally 12 month का जो होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस, तो इसमें हमारे पास तीन चीज़ें होती है। कैश फ्लो फ्रॉम एसेट, क्रेडिटर एंड स्टॉक होल्डर। फ्रॉम एसेट क्या होता है? कैश फ्लो फ्रॉम एसेट इन्वॉल्व थ्री कंपोनेंट: ऑपरेटिंग कैश फ्लो, कैपिटल स्पेंडिंग एंड चेंज इन नेटवर्क कैपिटल। ऑपरेटिंग कैश फ्लो, this refers to the cash flow that result from the firm's day-to-day activities of purchasing and selling. कैपिटल स्पेंडिंग क्या होता है जी? नेट कैपिटल स्पेंडिंग वुड बी नेगेटिव इफ द फर्म सोल्ड ऑफ मोर एसेट देन इट परचेज। ये नहीं कि अगर वो जितने उसने खरीदे हैं उससे ज्यादा एसेट को सेल कर दे। चेंज इन नेटवर्क कैपिटल क्या होता है जी? इट इज द अमाउंट स्पेंड ऑन नेटवर्क कैपिटल एंड रिप्रेजेंट द नेट इंक्रीज इन द करंट एसेट ओवर द करंट लायबिलिटीज। तो चैप्टर नंबर 7 में हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट ये हम जो ऊपर पढ़ चुके हैं। इसके जो हैं थ्री मेन कंपोनेंट होते हैं जी। क्या आता है जी? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज। ये हमारे ने स्क्रीनशॉट लिया था, आप हैंडआउट से इसे देख लेना एक बार। यूज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके यूज इंटरनल यूज और एक्सटर्नल यूज। इंटरनल यूज क्या होता है? यूज बाय मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड परफॉर्मिंग एवल्यूएशन। यानी कि जो मैनेजमेंट और एम्प्लॉय होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करता है। एक्सटर्नल यूज बाय द इन्वेस्टर एंड क्रेडिटर एंड द अदर स्टॉक होल्डर टू असेस द कंपनी फाइनेंशियल हेल्थ एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। इंटरनल यूज में हमारे पास प्लानिंग आता है, कंट्रोलिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। प्लानिंग फोर्स ऑन एसेसिंग द कंपनीज करंट फाइनेंशियल पोजीशन एंड एवल्यूएटिंग potential opportunities for the business growth and development. Controlling involves monitoring the return on investment for different assets and ensuring efficiency in asset utilization. Understanding help in understanding how supplier are found, like investor or leader analyze the firm's financial health and performance. External financial statement क्या होती है? एक्सटर्नल यूज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्रेडिटर होते हैं स्टॉक बॉन्ड एंड स्टॉक होल्डर, शेयर होल्डर। क्रेडिटर फोकस ऑन असाइनिंग द liquidity of the firm to ensure it can meet short-term obligation. Bondholder focus on the firm's long-term cash flow to evaluate its ability to repay debt over time. Stockholder focus on the profitability, the long-term finance health of the companies for investment and decision. Chapter 8, common size statement. One very common and useful way of making standardization cooperation comparison is by using percentage
instead of actual amount like rupees. A financial statement is which all items are expressed as a percentage as a base amount is called a common size statement. इसमें balance sheet item are shown as a percentage of total assets and income statement item as percentage of sales. बैलेंस शीट क्या शो करती है परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट और इनकम स्टेटमेंट शो करती है हमारे परसेंटेज ऑफ सेल्स रेशियो एनालिसिस another way of avoiding problem involve the comparing companies of different size is to calculate the company financial ratio. इसमें हमारे पास टाइप आती है शॉर्ट टर्म में आती है एबिलिटी टू पे द बिल इन शॉर्ट टर्म द फर्म्स एबिलिटी टू पे बिल ओवर द शॉर्ट रन विदाउट अनडू स्ट्रेस कैटेगरी में हमारे करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी क्विक रेशियो कहते हैं क्विक रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस quick ratio is equal to current liabilities. Current asset minus invested our current liabilities. Cash ratio is equal to cash our current liabilities. Long term में क्या आता है long term ratio में ability to meet long term obligation, asset management, investing and efficiency of asset use, profitability ratio, ability to control expense, market value ratio going behind financial statement.